Hi, good morning everyone, and welcome to your today's session. And आज का जो हमारा chapter है, that's called Works Like Magic. Very good morning. Okay, so how are you guys doing? How was your weekend? आप में से किस ने अपने weekend पे अच्छा ये वो वाली ग्रेटिट्यूड वाली क्लास चालू हो गई। हाँ, ये वही ग्रेटिट्यूड वाली क्लास चल रही है। ये आप अपने आप को म्यूट करके बोल सकते हो एक दूसरे के बीच, ठीक है? सो आप अपनी अगर वीडियोस ऑन कर सके सो दैट आई कैन सी ऑल योर वंडरफुल फेसेस आफ्टर द वीकेंड। Who all do we have on the call? Wonderful. So आप में से किस ने अपनी मैजिक असाइनमेंट्स करी वीकेंड पे भी? आपने अपनी वीकेंड पे भी काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखी, अपना मैजिक क्लॉक एक्सरसाइज किया, एंड उसके साथ ही साथ हो सकता है आपने अपनी हेल्थ वाली एक्सरसाइज को रिपीट करा हो। ओके, वेरी गुड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेस चैप्टर। So who would like to read? You can unmute yourself and take the notes. May I read? Can I read? I'm Tanisha. Ma'am, can I Dee, read? can I read? So you have to take your name because I I'm can't. Yavi. I'm Tanisha. Dee Viraj. Ahisha. Yavi. Yavi. Okay, Yavi. You can read. Don't come बजा रहे भाई। हाँ, अपना I'm going to mute everyone else. So Yavi, you don't mute yourself, and I'm going to mute everyone Okay. else. Can you? Okay, ma'am. Okay. Okay, let's start with today's chapter. Today's chapter is called Works Like Magic. आज की जो हमारी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस है उसको हम अपने काम के एरिया में यूज करने वाले हैं, ठीक है? Okay. Okay, let's start reading. If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges. When you force it into the real realm of magic. Tom Robbins, B. 1936, writer. तो आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी लो, कोई आर्ट लो, एनी डिसिप्लिन, एनी स्किल, कुछ भी ऐसी, आप भले अभी पढ़ाई कर रहे हो या कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो या आप जो भी काम कर रहे हो, maybe you're into debating, whatever skill it is that you take, maybe it's the skill of video gaming, whatever, take any discipline, take any activity, any art, and push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges, and then you force it into the realm of magic. आप अपने उस काम के अंदर ही जादू का अनुभव करना स्टार्ट कर दोगे. You start to feel magic in the work that you do when you push it beyond. So let's discover about. So आप सब लोगों को it's an activity. आप अपने लिए सोचोगे what does this paragraph mean to you? Please continue. How can it be that a person who is born into total poverty starts out with nothing and has very little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? And how is it that two people can start out in the same career and yet one person's career goes from success to even great success, while the other person works himself or herself into the ground with little success, no matter how hard they try? Out in the same career. The missing link to success is gratitude, because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So, without gratitude, it's impossible to have permanent success. हाँ, so इसके अंदर यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल दे रहा है ऐसे लोगों के बारे में जो बिल्कुल जीरो से उन्होंने शुरू किया. इट्स नॉट लाइक दे वर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून. जीरो से शुरू किया, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, मगर कोई प्रेसिडेंट बन गया या एकदम फेमस बॉलीवुड एक्टर या सेलिब्रिटी बन गया या अपना पूरा उन्होंने बिजनेस हाउस सेटअप करा. आप ऐसे कुछ लोगों के एग्जाम्पल्स को जानते हैं? मैम,
our Prime Minister, Mr. Narendra Modi. Yeah, He definitely. started off with selling tea, and Yeah. now he's a minister. Yes, who else? Write in the chat. आप किनको जानते हैं? Could be somebody in your personal life, could be somebody you know, could be a renowned figure जिन्होंने बिल्कुल zero से शुरू किया, and today they are somebody like people really look up to. Could be a political figure, could be a social figure, could be a business tycoon. Yeah, Mukesh Ambani, yes. His father, yes. So उन्होंने they started, या फिर ऐसा होता है कि दो लोग जिन्होंने इकट्ठे काम शुरू किया एंड एक जो है जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन गया एंड दूसरा जो है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है. ऐसे किसी एग्जांपल को जानते हो? Who started off at the same, like similar पढ़ाई करी, similar family background, similar initial investment मिली, सब कुछ similar मिला, मगर एक का काम कहाँ से कहाँ पहुंच गया heights में एंड दूसरे का still struggling going on. Yes, no. किनको जानते हो? हाँ, so like Mukesh Ambani and his brother, yeah, like they started. His brother's name is Anil Ambani. So like they started off as the same. They were born to the same mother. They stayed in the same house. They had the same father. They got similar education. Everything was same. इनफैक्ट उनके जब बिजनेसेस भी डिवाइड हुए तो दोनों के दोनों ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यूएशन के थे व्हेन दे वर डिवाइडेड. बट व्हाई इज इट दैट एक भाई का बिजनेस इज कीपिंग ऑन एक्सपैंडिंग, व्हाटएवर ही इज डूइंग ही इज गेटिंग wow results in that, whereas the other brother, his business is at the stage of bankruptcy? What happened? What is the secret to the success that one has and the other doesn't? आप में से आज तक को किस किस को स्कूल में आज तक किसी किताब ने आपको बताया है कि सक्सेस पाने का रहस्य क्या है? What is the secret ingredient to get success in your life? Who has told you? Has any teacher ever told you, या किसी formal school book training के अंदर आपको लिखा हुआ है? मतलब when I was in school I wasn't taught, when I was in college I wasn't taught. क्योंकि जो मिसिंग लिंक है जिसके बारे में 95% दुनिया को पता ही नहीं होता है is gratitude. Because according to the law of attraction you have to be grateful for what you have to attract success to you. So without gratitude it's impossible to have permanent success. हाँ, हो सकता है तुक्का मार के एक दो बार आप सक्सेसफुल हो जाओ, मगर अगर आप स्थायी रूप पे सक्सेस चाहते हो तो gratitude needs to be who you are. चलो इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं. Please start. So I request all students, please आप अपनी sit with your back straight, because आज का chapter is actually giving you the secret to how to have success in your work, whatever it is that you do. आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई sports खेल रहे हो, video game खेल रहे हो, जो भी कर रहे हो, what is the secret to success? Today's chapter is going to be about that. Continue, please. To bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. Whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she will be taken from him or her. हाँ, so बहुत ही सिंपल सी बात है. आप अभी जो भी काम कर रहे हो, आप सब बच्चों को पता है ना कि आप कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहे हो, भले वो ट्यूशन जाना हो, होमवर्क करना हो, मम्मी की हेल्प करना हो, क्लास जाना हो, एग्जाम्स देना हो, कोई स्पोर्ट खेलना हो, अगर आप ऐसे करते हैं. मगर ऑल ऑफ यू इंक्लूडिंग मी, वी आर डूइंग सम वर्क, ठीक है? एंड अगर आप अपने उसी काम के अंदर सक्सेस चाहते हो, मतलब हो सकता है आप कोई अपॉर्चुनिटीज चाहते हो, ज्यादा पैसे चाहते हो, कोई नया आइडिया चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, तारीफें चाहते हो, कोई इंस्पिरेशन चाहते हो, अगर आप कुछ आर्ट वर्क करते हो, whatever it is that you want, आप जो भी good thing increase करना चाहते हो अपने काम के अंदर, it's essential to be grateful for your job or work.
the more gratitude you have and the more you will have to be grateful for. अभी जैसा भी है, हो सकता है अभी आपका Am I audible? Hello, am I audible? Yes, no? I'm audible, yes, no? Okay, fine. So basically, like it's talking about that, 1 second, I'll share screen. Everyone can see the screen, yes? Okay. So it's saying that abhi aapke paas, say for example, presently your work is say studying for your exams या फिर getting your education. So abhi aapke paas जो है आप उसके लिए जितना grateful होगे. Say for example, thank you God, मेरे घर पे ट्यूटर आते हैं जो मुझे ये सब्जेक्ट और आसानी से पढ़ाते हैं जब तक मुझे समझ में नहीं आता. Thank you for that. या थैंक यू गॉड फॉर दीज बुक्स जिसके अंदर मुझे पूरा रेडी मटेरियल मिल जाता है कि मेरे एग्जाम में क्या आने वाला है, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे खुद जाके रिसर्च नहीं करनी पड़ती है, लाइब्रेरीज में घंटों बैठना नहीं पड़ता और अपना करिकुलम नहीं बनाना पड़ता. या थैंक यू गॉड मैं स्कूल जा सकता हूँ जहाँ पे देयर आर टीचर्स हु टीच मी विद व्हाट आई वांट, व्हाट इज बेनिफिशियल. तो आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड खोजते हो फॉर व्हाट यू हैव राइट नाउ, उतना ज्यादा गुड थिंग्स विल इंक्रीज इन योर लाइफ. एंड अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, पीछे हमने रिलेशनशिप के चैप्टर करे, हेल्थ का चैप्टर किया, मनी का चैप्टर किया, कि आप जितना ज्यादा अपनी लाइफ में फेवरेबल चीजों को इंक्रीज करना चाहते हो उतना ज्यादा आपको ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है. जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड की, किस किस को अपनी लाइफ में अभी ऐसा फील होने लग गया है जब से आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हो, पता नहीं कैसे बट थोड़ा बहुत खुशी खुशी फील होती है कि whenever I sit down and I find my blessings, you start to feel happier, you feel nice, you feel lighter, and you feel that oh my God, so many good things are there in my life. Yes, no? किस किस को ये फील होना स्टार्ट हो गया? क्योंकि ये सेम लॉ जो हमने अभी तक पढ़ा है ये आपके काम के एरिया में भी अप्लाई करता है. Whoever has gratitude for their work will be given more and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken from him or her. अगर आप gratitude नहीं करोगे, से फॉर एग्जाम्पल कंप्लेन करोगे कि अरे ये तो खराब है, या ये हिस्ट्री टीचर को तो कुछ पढ़ाना ही नहीं आता है, या मेरे समझ में कुछ नहीं आता है, ये सब बकवास है, आप जितना ज्यादा कंप्लेन करोगे अबाउट व्हाट यू आर डूइंग उतना ज्यादा वो सिचुएशन बद से बदतर होने लग जाएगी. This is not me saying, this is the book saying, and this is the law, this is how the law works. Yes, okay. Please continue. What was the name of the reader? Yavi. So Yavi, don't mute yourself. Unmute now. Yes, ma'am, just a minute. When you are grateful for your job, you will automatically give more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you. And as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have to, and your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. The amount you give in gratitude. ऑब्वियसली बात है ना, अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद, आप किसी चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं हो, तो आप सिर्फ उतना ही करोगे जितना करने की नीड है, आप उससे एक्स्ट्रा नहीं करोगे. से फॉर एग्जाम्पल आपको अपने जो आप स्कूल से एजुकेशन पा रहे हो आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो, तो आप बस उतना ही पढ़ोगे जितना बस पास हो जाओ वाली बात है, जिस वजह से जायज सी बात है आपके रिजल्ट्स भी वैसे ही आएंगे, फाइनली आपको जो मिलेगा उसमें भी वैसे आएंगे. एंड इवेंचुअली हो सकता है आपका जो काम कर रहे हो वो जॉब का, आज आप स्कूल में हो, कल आप अपना बिजनेस जॉब जो भी करोगे सेम रूल अप्लाई करेगा. इवेंचुअली इट विल स्टैग्नेट एंड इवेंचुअली डिटीरियोरेट. स्टैग्नेट का मतलब समझते हैं सब? स्टैग्नेट मतलब वहीं पे रुक जाना, उसके अंदर नाउ इट्स नॉट गेटिंग वेल, अब वो वहीं पे मतलब रुक गया है. एंड जब कोई चीज स्टैग्नेट हो जाती है तो उसके बाद वो खराबी होने लगती है.
It starts to get worse to worse. जैसे हो सकता है आज आपके 75 आ रहे थे, आपको लग रहा है अरे यार ये क्या नॉनसेंस है, तो कल 70 आ जाएंगे, उसके बाद कहोगे अरे ये सब बकवास है, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, रियली इफ यू से सो, एंड देन वो 70 कब 50 बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. इट विल स्टार्ट, एंड देन which could mean losing your job. In your case it could be losing your marks or losing your school or whatever it is, you know, work that you're doing. अगर आप किसी sports में है तो that could mean losing your runs. If you're into cricket, losing your titleship, getting a good, जो भी आपका रहता है, ठीक है. सो एक चीज याद रखिएगा, जो ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे, भले ही जानबूझ के करना हो, उनके पास जो है वो भी उनसे ले लिया जाएगा. सो प्लीज कंटिन्यू. The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. If you are a business owner, your business's value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spirals downward. वेरी इंपॉर्टेंट. आज तक हम क्या सोचते हैं कि अरे मैं थोड़ी ना अपना, आपके अगर आपके कोई नॉन पीपल बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं या आप अपनी पढ़ाई करते हो, तो आपको क्या लगता है, क्या कहते हो, अरे मैं तो अपनी पूरी मेहनत करता हूँ यार, रिजल्ट नहीं आता तो अब मैं क्या करूँ. या आप बिजनेस करते हो, आप कहते हो अरे मैं तो अब दुकान पे जाता हूँ, काम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, क्लाइंट्स नहीं आ रहे तो मैं क्या करूँ, या पैसे नहीं आ रहे तो मैं क्या करूँ. नॉर्मली 95% of the people that live their life like this. Yes, no, ये डायलॉग्स आपने पहले सुने हुए हैं कि उन्हें लगता है मैं थोड़ी ना, अभी तो पूरी इकोनॉमी ही डिप्रेशन में चल रही है, ऐसे चल रही है, तो इसका मैं क्या करूँ. सो वो ना बाकी चीजों को ब्लेम करते हैं, जिस वजह से, अब ऑब्वियसली बात है, ब्लेम कर रहे हो तो ग्रेटिट्यूड तो नहीं है, जिस वजह से फर्दर आप अपनी सिचुएशंस को वर्स से वर्सन कर रहे हैं. यू कंट्रोल, यहाँ पे उन्होंने एक इतना कमाल का रूल मंत्र आपको दे दिया है. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. जितना gratitude दोगे उतना ही आपको इसके बदले में बॉक्सी में मिलेगा. अगर आप बिजनेस ओनर हो तो आपके बिजनेस की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू योर ग्रैटिट्यूड. जितना ज्यादा ग्रेटफुलनेस आप अपने बिजनेस के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए रखोगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा, इंक्रीज करेगा. जैसी बिजनेस ओनर्स वो करना, ग्रैटिट्यूड करना छोड़ने की बजाय स्ट्रेस और टेंशन मोल ले लेते हैं, बिजनेस की वैल्यूएशन नीचे. अभी आप स्टूडेंट्स हो, बट अगर आपने किसी की केस स्टडी देखी हो या अपने पेरेंट्स में किसी में ऑब्जर्व किया हो, आई डोंट नो इफ यू, आपकी एज में आपने वो ऑब्जर्व करा होगा या नहीं, but I can speak from my example. Like initially when I started off my wedding planning business, I'm a wedding planner by profession. So when I started my wedding planning business, you know, initially जब कोई business start करते हैं तो full of excitement, full of passion, full of new ideas, full of ओ इसको हम ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, all those things. एंड जितना ज्यादा आपके अंदर ये वाली फीलिंग्स रहती हैं, उतना ज्यादा जल्दी 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 आपका बिजनेस टेक ऑफ होता है. क्लाइंट्स, मतलब आई रिमेम्बर दे वो हमें मुझे कॉल करते थे कि आप प्लीज आओ एंड मेरे साथ बिजनेस करो. लाइक दे वुड फॉलो अप विद मी दैट आई वांट टू डू बिजनेस विद यू, प्लीज कम डू दिस, एंड वंडरफुल. प्रॉफिट्स आर अमेजिंग, मनी इज अमेजिंग, फीलिंग्स अबाउट सेल्फ इज अमेजिंग एंड वंडरफुल. एंड देन धीरे 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 काम बढ़ा या कुछ ऐसे ब्रेकडाउन्स आए जिस वजह से, या स्ट्रेस एंड टेंशन टेक ओवर कर लेती है जिस वजह से द बिजनेस स्टैग्नेट्स. ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में भी ये सेम एग्जांपल देख सकते हैं. आप जब किसी चीज, आप अगर पढ़ाई को भी लेते हो, अगर आपको पढ़ाई का भी स्ट्रेस होने लग जाता है, जब तक आप पढ़ाई मजे मजे में कर रहे हो, क्या मेरे को पढ़ने में मजा आ रहा है, आपको उसके अंदर और ज्यादा तरक्की मिलेगी. सॉरी. एंड जैसे आपने अपनी पढ़ाई के लिए स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया कि ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा ऐसे हो जाएगा, चिंता करने लग जाए, आपको खुद ब खुद दिखेगा योर मार्क्स विल स्टार्ट टू स्पाइरल डाउनवर्ड्स. हमारे घर में ये मैंने ऑब्जर्व किया है, हमारी जॉइंट फैमिली है. सो आई स्टे विद माय ब्रदर ऑन वन फ्लोर, चाचू चाची के बच्चे, ताई ताऊ के बच्चे. एंड आई रिमेम्बर लाइक हमारे घर में ना द कल्चर लाइक फॉर माय फैमिली इज वेरी, लाइक माय पेरेंट्स वर ऑलवेज वेरी रिस्पेक्टफुल एंड चिल अबाउट कि मेरे बच्चों को तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे.
And me and my brother, we were always grateful for our studies, for our tutors, and we studied and we got wonderful marks. Similarly, parallelly, our cousins, जो दिन रात घिसते रहते थे and stress में रहते थे, point being tension में रहते थे कि अरे मार्क्स नहीं आए तो कॉलेज नहीं मिलेगा, मार्क्स नहीं आए तो क्या करूंगी मैं, मेरे को तो पूरे घर को ऐसे करना है, आई वांट टू अर्न वेल, करियर का क्या होगा. जो बच्चे स्ट्रेस में पढ़ते थे उनके मार्क्स अनबिलीवेबली मतलब जितना कम आए as compared to what they were also expecting. And so how is this working is simply upon आप जितना ज्यादा gratitude करोगे उतना ही आप receive करोगे. Please continue. If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity, and when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work. And you shouldn't settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful to the job you have. Today, imagine that you have an invisible manager whose job is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, 1 second. Saisha, please stop doing whatever you're doing. Please, thank you. Please continue. your job is to find as many things as you can to be grateful for. So at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. The longer the list is, the more magic your हाँ, so ये आपकी आज की एक्सरसाइज आपको बता रहा है, आपको आज की असाइनमेंट की बात बता रहा है. ये इट्स सेइंग दैट अगर आप पेरेंट हो एंड आपका काम है भले घर पे बैठ के घर का काम संभालना, योर वर्क इज टू टेक केयर ऑफ योर होम, उसके अंदर भी आप जो भी चीज, उसको स्कूल से निकाल दिया गया था उनको. Albert Einstein. हाँ, तो उनकी माँ. So my invitation to every person attending this call is, see, आप अगर इस कॉल को आधे मन से करोगे तो उसके रिजल्ट्स भी आपको आधे मन से मिलेंगे. So I'm really expecting and hoping that each and every one of you is sitting in a silent space where there's nobody talking to you or disturbing you just for these 40 minutes. इसके आगे पीछे जो करना है करो, ठीक है? So this much I expect from each and every one of you, presuming you are committed for your dreams, and otherwise as you like, ठीक है? हाँ, so आप जितना ज्यादा gratitude करेंगे, you should love your job whatever it is and be excited about going to work, and you should not settle for anything less. You should love your job. आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो you should be excited about पढ़ाई. आप क्रिकेट खेलते हो तो you should be excited about cricket. आप अभी पेंटिंग कर रहे हो तो you should be excited about it, and you should not settle for anything less. Anything less than excitement you should not settle for. And अगर अभी आपको अपने प्रेजेंट काम के बारे में एक्साइटमेंट नहीं है या आपका वो ड्रीम काम नहीं है जो आप करना चाहोगे, कोई नहीं, आप उस ड्रीम काम को भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने का जो तरीका है इज बाय बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू डू हैव राइट नाउ, ठीक है? एंड आज की असाइनमेंट आपको ये बता रहा है कि आपने इमेजिन करना है जैसे आपके पीछे एक मैनेजर खड़ा हुआ है. आपने मूवीज में देखा होगा ना, सेक्रेटरी या मैनेजर, तो उसके हाथ में एक नोटबुक और एक पेन है एंड वो आपके पीछे खड़ा हुआ है. थोड़ा पीछे मुड़ के उसको हाई कह दो, इनविजिबल है मगर हाई कर दो उसको पीछे मुड़ के, हेलो, ठीक है? एंड आज का पूरा दिन ये मैनेजर आपके साथ रहेगा एंड आपके साथ चलेगा, एंड आपके जैसे भी थॉट्स हैं, आपकी जैसी भी फीलिंग्स है, ये उनका ना सारा नोट बना रहा है. लाइक इसको आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, ये इट्स टेकिंग अप योर फीलिंग्स. तो आप पे आज के दिन की आपकी असाइनमेंट क्या है कि आप आज जहां भी जाओ, जो भी करो, उसको आप जितनी सारी चीजें आप ग्रेटफुल हो सकते हो वो आपने उसको लिखवानी है. वो खुद लिख लेगा, आपने बस उसको बोलना है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि
Manager, I'm grateful for this AC in my room because इसकी वजह से मेरा temperature control है room का. And manager, I'm grateful for this laptop क्योंकि ये laptop बहुत ही कमाल का है, इसकी speed बहुत amazing है, बहुत बढ़िया laptop है. My manager, I'm grateful for this wonderful shirt that was there in my wardrobe today. I love it. It's so cute. Manager, I'm so grateful for this wonderful bottle जिससे मैं आज पानी पी पा रही हूँ class lead करते करते. It's so nice, wonderful. ठीक है, इसी तरीके से आपने अपने मैनेजर को जितनी लंबी लिस्ट हो सके लिखवा सको आपने लिखवानी है. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. अच्छा, so the longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work success, opportunities, enjoyment and fulfillment. जितनी लंबी लिस्ट अपने मैनेजर को लिखवा सकते हो लिखवाना. ठीक है, ये है आपकी आज की असाइनमेंट. प्लीज कंटिन्यू. Think about all the things you can be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed. Who would give anything to a job, to have a job? अगर आप अभी स्कूल जा रहे हो तो think about that. Wow, the fact that you really have a school. Think about so many students who do not have the opportunity to go to school or the opportunity to go to an English medium school and who would give anything to get admission in your school, in your place. So the fact that you have that opportunity, be grateful for that. Please continue. Think about the time saving equipment you use, such as phones, printers, the internet, and computers. Think about the people you work with and the friendships you have with them. Think about the people who have your who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspect of your job that you love doing. Have your invisible manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, "I'm so grateful for dash." हाँ, तो हो सकता है आप बोल सकते हो कि आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे को इस स्कूल की वजह से इतने बढ़िया बढ़िया दोस्त मैं बना सके जिसके साथ मुझे बहुत मजा आता है. आई एम सो ग्रेटफुल कि किसी ने ये एक ऐप डेवलप करी जूम जैसी, उसको इतने टाइम तक कोड किया ना हमारे लिए अवेलेबल बनाए ताकि हम ये क्लास लीड कर सके. या आई एम सो ग्रेटफुल कि आई एम सो ग्रेटफुल कि हमारे टीचर्स भी इतने डेडिकेटेड हैं कि वो भी इस टाइम पे भी जब हम स्कूल नहीं जा रहे हैं वो घर से भी क्लासेस लीड कर रहे हैं ताकि मैं पढ़ सकूं एंड आई एम ऑन टाइम. सो एवरीथिंग, सो ऐसे जितनी ज्यादा चीजें आप ढूंढ सको. हो सकता है आई एम ग्रेटफुल टू माय हाउसमेट जो मेरे कमरे को या मेरे स्टडी रूम को क्लीन करके रखती है जिस वजह से आई हैव अ good study environment to study in, a conducive study environment to study in. तो इस तरीके से आप जितनी ज्यादा चीजें आप लिखवा सको आपने अपने मैनेजर को लिखवानी है. प्लीज कंटिन्यू रीडिंग. The more deeply your manager can see you feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident. They are simply gratitude's magical power at work. If this works like magic, practice falls on a weekend or when you're not at work, move on to the next day's practice or practices and then go back and use the magical practice on the first day you're back at work. So आपने ये एक्सरसाइज आज ही करनी है. ठीक है, एंड आपके अंदर द इंटेंशन ऑफ डूइंग टुडेस प्रैक्टिसेस, आप इसको जितना ज्यादा दिल से करोगे, जितना ज्यादा दिल से आपका मैनेजर आपको देखेगा कि आपने ग्रैटिट्यूड फील किया है, उतनी ज्यादा जल्दी वो आपकी लाइफ में वो ड्रीम, अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस, ईज, फन, एक्साइटमेंट, अपॉर्चुनिटी, वो सब चीजें वो ले आएगा. कभी आपने सुना होगा ना, अरे दिस पर्सन जस्ट गॉट लकी, या इसको तो ऐसी लकी ब्रेक मिल गई. कभी कभार होता है ना कि इसको तो ऐसे, अरे इसका तो लक बाय चांस था, ये तो ऐसी तुक्के से इतना हिट बन गया, जीरो से हीरो एक दिन में. ओवरनाइट देखा है आपने कुछ लोगों को ऐसे स्टार बनते हो, कैसे बनते हैं. कुछ भी चीज इस दुनिया में बाय चांस नहीं होती है. nothing happens by chance on this planet. It is simply gratitude's magical power at work. Somebody at some time wished for it to happen.
because of which it happened. Okay, so this is today's magical practice, and let's read today's assignment now. Works like magic. Repeat steps 1 to 3 of magical practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Write why you're grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. तो आप में से किसने अपने आज की count your blessings लिख ली है? Who all have written your count your blessings for today? Because this is the first thing in the morning. So before you come to class, this assignment needs to be done before you come to class daily. So if you've done it, very good. If you haven't done it, please do it. Please continue. While at work today, imagine you have an invisible manager following you around, taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things you can be grateful for. Have your manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I'm so grateful for dash, and feel as grateful as you can. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, Yavi, for reading today's chapter ma'am. for all of us. Thank you very much. Okay, so now, अगर किसी का कोई question है या कुछ share करना चाह रहे हो पिछले, so you can take your name first, and one by one you can ask your question. Vanshika. Yes, Ma'am, Vanshika. Sachi. No, so first Vanshika and then Sachi can ask. Yeah. Ma'am, I have a question that the count of blessings we have the assignment. Sometimes I'm not able to find 10 blessings on everyday basis. So what should I do? Spend more time looking for it. So which day are you not able to find? अभी तो party शुरू हुई है. Which? So I'll tell you a hint. ठीक है, अगर आप कभी count your blessings ना ढूंढ पाओ, so to give you, you know, for your ease of कि उस direction में सोचो, उस दिन का chapter जिस भी चीज के बारे में है. जैसे हमारा एक दिन relationships पे chapter निकला, एक दिन money पे निकला, एक दिन health पे निकला. तो जिस दिन का चैप्टर है या पिछले दिन का जो चैप्टर निकला, आप उसके चैप्टर के हेडिंग के अकॉर्डिंगली आप अपनी ब्लेसिंग्स ढूंढ सकते हो. तो इट विल गिव यू यू नो इजी कि आप इस डायरेक्शन में ढूंढ लें. मैम बट वैसे हम अपने आसपास जो भी चीज देखे मैम वो ग्रेटिट्यूड से ही मिली है हमें. हम सारी हमारी one second. Vanshika, is your question answered? Yes, ma'am. Okay, thank you. Yes, second question, please take your name. Ma'am, Sachi. Yes, Sachi. Ma'am, can you say again the assignment of today because there was very network problem. So Sachi, the PDF of the book is shared on your WhatsApp groups. You can take a screenshot of this. So just take a screenshot. This is today's assignment. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, I have another doubt, Sachi. Yes, Sachi, ask. Ma'am, if we don't have work, we don't do work, so what will we do? So Sachi, what work do you do at home? Do you go to school? Yes, ma'am, I have online schools. Do you get assignments? Yes, ma'am. Do you give exams? Yes, ma'am. Is that your work? Yes, ma'am. That's your work. Okay, ma'am. Thank you. I have been sharing. Yeah. Okay, please take your name. Thank you, Sachi, for your question. Tanvi Jain. Yes, Tanvi. Please turn on your video also. Ma'am, actually my network is low, so I turned off my video. Okay. Ma'am, I wanted to ask that you told that you had shared the PDF of the book. So can you share it again because I joined the group later? That's fine. I'll share it again. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Okay. Any other question anyone has? या कोई share करना चाह रहा है? आपको? No, I have a sharing session. Yes, Saisha. Please turn on your video. Ma'am, yesterday my stomach was paining a lot, and then 5 minutes later I thought that
I should say thank you, thank you, thank you for when my stomach was not paining, and I said thank you, thank you, thank you for that, and then my stomach stopped paining. Beautiful. Really, really good, Saisha. Wonderful. That good, good, good. Wonderful. Very good. Who else? Who else wants to share? आप कुछ share करना चाहते हो? आपको अपनी life में आपने पिछले 5 days, 6 days you've been practicing gratitude. आपको अपनी life में कहीं पे कुछ experience हो रहा है? हाँ, so yes, who wants to share? या आप कुछ question पूछना चाहते हैं? हाँ, unmute yourself, please. Unmute yourself if you have your question. Yeah, आप कुछ share. अच्छा, one more thing. कल का जो हमारा class है, tomorrow's class might go longer than 40 minutes because it's going to be a long chapter. मैम हम शेयर करना चाहते हैं. Share करना चाहते हैं. मैम मैं नाहर बोल रहा हूँ. हम जर्सी के लिए अपना मेरा एक फुटबॉल कपड़ा है, उसके लिए हम थैंकफुल थे. और कल हमारे एक आंटी हमें बाहर से हमारे लिए 2 जर्सी और लेके आए, और वो हमें फ्री में मिला. Wow, so great, so wonderful. Thank you so much for sharing. So गुप्ता बोल रही हूँ. ये वो बच्चे हैं जो मेरे पास क्लास करने आते हैं, और मैंने लाइव आपकी क्लास में इन लोग को ज्वाइन करा दिया है. Wow, thank you so much. Thank you so much. ये लोग सब बहुत ग्रेटफुल है आपके लिए. अरे वाह. Hello to everyone. Thank you for joining in. Thank you so much for joining in. So wonderful. Thank you Urmila ji. Thank you so much. इन सबको हमारे इस gratitude की practice में invite करने के लिए. Thank you. बहुत सपने पूरे हो रहे हैं. इसके नाहर के तो बहुत जबरदस्त हो रहे हैं. अरे वाह. Wow, thank you. Thank you so much for coming. Okay, yes. Who else? और कौन शेयर करना चाहेंगे? आप कुछ शेयर करना? मेरा भाई ये भी मेरे साथ क्लास करता है. अरे वाह, वंडरफुल. इट्स वेरी पावरफुल, यू नो. आप अपने कजिन्स के साथ, अपने भाई, अपने बहन, आपके आसपास जितने भी बच्चे हैं, आप, बिकॉज दिस क्लास इज ओपन फॉर ऑल. एंड I mean, this session जो आज हमारा हो रहा है, this is happening after months, because for young people it had stopped. It was happening only for adults. But this young people session is happening now after, I think, at least 4-5 months. So my request is, आप अगर किन्हीं बच्चों को जानते हैं, आपके cousins, आपके school friends, आपके tuition friends, maybe park में आपके कोई दोस्त हो, आप उन सबको इसके लिए invite कर सकते हैं, so that they can also experience the magics in their life. ठीक है? So okay, now आज की assignment I hope सभी को clear है. For people who are not in the group, I will send you my WhatsApp number. आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं, and I'll send you the link of the WhatsApp closed groups for us. ठीक है? Okay, so do today's assignment. आज की हमारी assignment है works like magic. आप जो भी काम करें, आप भले मम्मी की help करें काम में, स्कूल का काम करें, स्पोर्ट्स का काम करें, वीडियो गेम का काम करें, हो सकता है आप सोशल मीडिया पे ब्लॉगर हो तो आपका ब्लॉगिंग का काम हो. Irrespective of what, जो भी आप काम करें, उस सब में आप जितनी ज्यादा चीजें खोज सकें to be grateful for, अपने इनविजिबल मैनेजर को आप अभी से लिखवाना शुरू कर दो. ठीक है? यस, सबको क्लियर है आज का असाइनमेंट क्या करना है? ग्रेट, वंडरफुल. ओके, एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स अगर आपको कुछ शेयरिंग करनी होगी तो we'll keep time for that as well. So I thank you all. Thank you so much for being a part of today's session. I'll see you all tomorrow. Have a wonderful and a magical day ahead. Thank you so much. See you. Ma'am, please. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, Dee. Thank you, Dee. Thank you, Dee.